Zoom sessions also, huh? For people we can have. हेलो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इवॉल्व विद जैस्मिन। आज हमारे साथ है उल्का जी। शी इज़ अ एनएलपी सर्टिफाइड ट्रेनर। तो आज आप लोग तैयार रहिए, ये आपसे काम करवाने वाली है अच्छी खासा। So whosoever is in with us, please type yes in a chat box, and I really welcome you all on today's show. So welcome Ulka ji. Good to hear you. Good to have you over here. It's my pleasure, Jasmine. I in fact wanted to be here from long time, but with my tight schedule, I'm so happy that this day has come at last. Of course, it's like बहुत after a long time हम लोग connect हो रहे हैं, so it's really good to have you back. Yes. तो गाइस, कौन And कौन है आज का टॉपिक तो आप लोग देख ही चुके हो। हेडलाइन है रिकंस्ट्रक्टिंग योर माइंड फ्रेम्स। सो बिफोर दैट हम लोग पहले उल्का, आप मुझे अपना थोड़ा सा हमारे यूजर्स के लिए अपना बैकग्राउंड प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हो, अपना इंट्रो दे सकते हो, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड हु उल्का इज एंड व्हाट शी डू। okay, I am first a human being. I am not connected to anything. I'm not a Maharashtrian. I'm not a Indian. I'm not this one. I feel that my introduction should be like I'm a human being. Yes, and basically I'm from Mumbai, and initially I was working for HDFC Limited. After that I started my own this one into recruitments called US recruitment consultants, because I got the inspiration for from the time I was working for a company, a travel company called Taj Tours in UK, that is in London. And then I thought working was not for me. I need some more thrill in my life. So when things were financially, I became little independent. I took that step to start this, and there I am. While recruiting, I would feel there are so many people who are very talented, but when it comes to giving an interview, Jasmine, they would fumble. They can't present themselves, and people who are not that intelligent or really good for work, you know would get through like this, but they would change their companies a lot. And the genuine people who really thrive to get a job, who needed a job to run their family, who were the bread butter earners, I thought I should do something for them. So I diversified myself into grooming them, training them for the interviews. And the rate of my placements also became more. It was one day that I had got an assignment from JP, and I placed almost 75 people there. So Oh, that was a eye opener for me. I thought I should do something into this, and I started grooming myself. First workshop I did was from Sabira Merchant. I didn't know what she taught me, but I can never forget how she taught me, how she spoke, how she handled the audience, how she got connected. That was the main important thing, how she got connected to the audience. And then my journey started as a trainer, and that is where I am here now. सो गुड टू हेयर यू। इवन आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग कि आपने कैसे अपना जर्नी करेक्ट किया। इट्स रियली अमेजिंग टू हेयर फ्रॉम यू। सो Thank you. वेलकम। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस एनएलपी और एनएपी स्टैंड्स फॉर, क्योंकि यूजर्स Yes. को पहले हम इस चीज में ज्यादा करें कि ये हम कंस्ट्रक्टिंग माइंडसेट की बात करें या कुछ और बात करें, तो सबसे पहले थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इट इज एक्चुअली। Okay, NLP actually means neuro linguistic programming. So when I got into this journey of training people, initially it started with just interview skills, training for interview skills. But then I explored there is something which is more important than the hard skill, hard work, is basically the soft skills which come into play, which make you very smart. You work smart. So there is some kind of grooming and everything. And in this journey, I got connected with the Trainers Association, which was started by Asif, called ITC, and where he would conduct lot of workshops for the budding trainers and people, whatever new comes in this industry related to training. Every type of training
every type of topic, every type of, we were updated through this ITC programs. We were exposed to a lot of things. He's done a great work, you know. So then I got into this and then explored ki there is something called as NLP certification, which one of the trainer had, he was promoting it, and he had conducted this classes. So by fluke I did NLP, but got to know there is so much depth in this, because NLP can help you in anything. NLP is for you if you are interested in developing yourself in your communication skills, you want to improve it. It is a technique which focuses mostly on the behavioral changes that can be used for various things to achieve your different kind of goals. So NLP is how you can modify your thoughts, how you can modify your thinking, how you can modify in spur of second, which can change the whole picture. The script what you had in mind at this moment can change everything. For example, just before the program, Jasmine, when I connected, you said do something which will bring little bit of activity based of things. So totally my script changed, you know. So I said yes, should not be just a chat talk or something. Let us bring some things which will make the audience think on their own, because just talking like a parrot or chatting will not serve the purpose. They need to experience it, and I'm into experiential training already, so this has helped me to get one small activity during in this program. Thank you. Over to you. डेफिनेटली मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी क्योंकि यूजर हैज टू एक्सपीरियंस इट। क्योंकि Yes, हम लोग यही अपने ऑडियंस को प्रॉमिस करते हैं कि एवरी डे दे विल लर्न समथिंग न्यू, एंड yes, आफ्टरवर्ड्स वो उनके ऊपर है कि उनको किस चीज़ को फॉलो करना है, किस हद तक फॉलो करना है। बट एटलीस्ट एक गाइडेंस होनी बहुत ज़रूरी है, राइट पर्सन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी ये समझते हो कि सही मेंटर नहीं मिलेगा तो गाड़ी विल बी स्टक। सो दैट्स द टुडेज रिक्वायरमेंट। yes. सो So गाइस आप लोग टाइप कर सकते हो आपके क्वेश्चंस कि आपको क्या क्या चेंज करना है। आई नो सम पर्सन्स का क्वेश्चंस होते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करें, तो आज आप भर भर के क्वेश्चंस दीजिए उल्का को। शी वोंट गेट कहते हैं ना कि टायर्ड ऑफ, और वो बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। एलेक्स यू कैन आल्सो आस्क अ क्वेश्चन कि yes, yes, आपको yes, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ और हाउ यू कैन ग्रो योर सेल्फ, बिकॉज शी इज गुड इन yes. दैट। So I will not be scared of any questions. If you want, I will come in your dreams also and answer your questions. Okay. 365 degrees, 24 hours. Okay. So before you ask a question, there is something which you said, how to build confidence. So let me connect you to today's topic, which where we are talking about frames, how to Right. reconstruct frames. So that is very important. Well, you're just taking a small thing like building a confidence. So confidence कैसे आता है? With experience तो सबको ही आता है. Yes, but when you're talking about confidence, it is basically building confidence is every parent that who has to put in their child. So basically there are people who might get that confidence when they grow up. In my case, it so happened that when I was small, I was a very shy person, introvert person. I can't even give eye contact to people. I can't even talk to a male gender जो अपना opposite gender है. I can't talk. People who are little more brilliant than me or intelligent than me, I can't ask question, I can't converse with them. So this was my problem, which is most of our problems. And राइट। sometimes there is a कभी कभी problem ये भी आता है कि English speaking, जब भी हम English में बात करते हैं, हाँ we are intelligent but we can't express with words. So ये confidence plays a very important part, and that my mother had done when I was small, where बोन मिटा की जगह उसने कॉन्फिडेंस दे के दूध पिलाया. So basically, yes, which दैट्स is very नाइस। important, because she would make me just to make me confident. She just would put me on the stage and she ओह! would vanish and say, "You just talk." But I was not good in talking, so I was good in dancing. So when I started this hobby of mine, which helped me to connect,
and be more confident. So she found a way that she can't speak, she can't talk. So then she found a different way, and that is called, that is how she framed herself. So if we are talking about frames, so framing is one of the NLP technique which people can use. Frames is nothing like, एक चौकट बोलते हैं ना वैसे, जैसे पहले के इसमें एक पिक्चर आप निकालो, दो पिक्चर निकालो, एक चलने वाला पिक्चर, एक स्टैंडिंग पिक्चर, एक वॉकिंग पिक्चर के हम लोग फ्रेम्स बनाते थे, राइट? सो ये फ्रेम्स बनाने के बाद वो, इफ यू flip it, you remember that book we would use in our, जब भी हम childhood में, we would just flip and we would feel that person is walking from one end to another. सो सेम टेक्निक वी हैव कि एक कुछ आपको बोलना है, कम्युनिकेट करना है, नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, सो देर आर सो मेनी फ्रेम्स इन माई माइंड। सो कौन सी फ्रेम यूज करनी है, अभी नहीं करनी है, डिलीट करनी है, ये यूजफुल है कि नहीं? व्हेन यू सेड इंट्रोडक्शन हैज टू बी इन शॉर्ट, आई हैड सो मेनी फ्रेम्स, बट व्हेन आई सेड कि नहीं, आज का टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, आई कांट सिट एंड जस्ट गो ऑन टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड प्रमोटिंग माई सेल्फ, सो मैंने वो कुछ फ्रेम्स निकाल दी। The same interview, if it was going to be only about myself, then I would have put added some frames into it. So it is like, frames are very important. It is a lens of looking at things. So confidence build करना है. So basically confidence build करने के लिए ये तो एक emotion है, डर एक emotion है, या nervousness एक emotion है. So first accept those emotions. These are all your emotions. बट वो कहाँ जताना है, किस हद तक उसको काबू में रखना है, दैट इज इन योर हैंड। सो कॉन्फिडेंस दिखाते समय आपको नर्वसनेस नहीं जताना है, you can't show it. So there are some breathing techniques, you can use that. You can see, watch people how they are talking, go and attend their live sessions, या उनके सेशन में दो तीन चीजें बात करो. So तो how, the question might be how I improved my confidence. So it was like I started taking participating in the social events like Ganpati ka ho ya events for Women's Day ho, ye ho, तो I started doing in my complex. तो यहाँ उससे पे मेरी यहाँ कॉन्फिडेंस पे बढ़ मैं गई. आपको यस. सॉरी डिस्टर्ब कर रोक रही हूँ, या. क्योंकि गाइस एक तो हम लोग क्वेश्चंस जो हैं इधर सेशन के बाद स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली हम सबके क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे, सो स्टे ट्यून विद अस टिल दिस थिंग ओवर। एंड जैसे आप बोल रहे थे उल्का कि लाइक इवन आई रिमेम्बर बचपन में, आई गेस इवन आई गॉट सो मेनी प्राइजेस ऑन दिस स्पीकिंग एक्टिविटीज ओके. इवेंट्स के लिए। बट इवेंचुअली विद द टाइम ना, जब आप वर्क करते हो, पीपल आर लाइक यू आर नॉट गुड इनफ, यू ऐसे है वैसे है, तो वो इतनी सेल्फ प्रोग्रामिंग हो गई थी, रीप्रोग्रामिंग, कि आई एम स्टार्ट हैविंग अ फियर ऑफ स्टेज, जो सबको होता है, मतलब सब कुछ ओके. पता है। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन लाइक रीफ्रेम आवर माइंड व्हेन वी आर गोइंग ऑन अ स्टेज, क्योंकि डेफिनेटली मुझे भी बहुत हेल्प करेगा और जो और पर्सन है उनको भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर आप थोड़ा सा इस चीज के ऊपर बता सकते हो, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। Yes, I will I will also answer these questions which have been put by Urvashi's question. I can see here. So हाँ, एक quickly, I will क्वेश्चन। just, yeah, answer that. I wanted to ask what, so NLP का जो ये है, ये techniques है. So I am not a NLP practitioner. Yeah. So there is a difference between NLP practitioner and a person. I use these techniques like frames, anchor, timeline. These are the things which will help you to use it in your, in my trainings. Yeah. So somewhere I use it while connecting with some participants when they have questions, when they have problems. So I use these techniques to make them, so for example, they have a fear, to diffuse this fear. Do you want to have this fear, or you want to come out of it? If you want to come out of it, then you will have to diffuse, you will have to fight it out. But if you want to run away, you might run away this time, but that is temporary. You, next time you might have that fear. एक कुत्ते ने मुझे जब भी काटा था, चाइल्डहुड में काटा था, उसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े हो गए हो, कुत्ते से भी आप में बहुत ताकत है, बट यू फॉरगेट दैट यू हैव दैट काइंड ऑफ. सो हाउ टू डील विथ इट, हाउ, सो यू कैन बी फ्रेंडली टू दैट डॉग, यू कैन गिव हिम सम बिस्किट्स, हाउ यू कैन जस्ट स्पीक टू देम. जब एक कुत्ता दिखता है, हम लोग, पहला वर्ड आता है हट,
and you say it the way you say it, your body language, they can't understand your language, they can see your body language. तो वो body language उनको कैसे दिखती है, that is a frame of them. उनके दिमाग में क्या frame है, anger दिख रहा है उनको. So basically when you have those kind of frames removed from yours and you deal with that dog in a very friendly manner, they can see that, and then their anger will go, and then they will become more friendly, and slowly you will be able to deal with your fear. So suddenly you don't go and start touching the dog. First you need to talk, make those sounds which are non verbal. Sometimes gestures आपके अच्छे होने चाहिए, अपना communication is very important. सो ये करते करते हम लोग ये सीख लेते हैं. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चंस, सो हैविंग दैट फियर, सो प्रिपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नो वन वाज born speaker, no one was born to become a leader. See, so many people become leaders. It is not important that leader, every leader is successful, but to lead is very important. How you start, the person who starts is important. So be a leader so that people, you are making a way for others. So मैंने क्या किया, I will just tell you in a very simple way, that when I wanted to be, I was low in my motivation, self motivation कम था मेरा, तभी I started motivating myself, but it was not working. So I started motivating others. जैसे हम यूज करते हैं वो वर्ड्स टू मोटिवेट अदर्स, दैट वर्ड्स इम्पैक्ट subconscious mind, and then you yourself, अरे मैंने इसको बोला है तो first I need to be like that. I need to walk the talk. So then automatically in the auto mode your subconscious mind is taking that data, and you will see that your system thinking, there is a change in your system thinking, and you start getting your way out. It is not wrong to make mistakes, but then people are creating an image about you. So it is better to always prepare yourself, but don't be scared of mistakes, because then it is useless, you are the losers. Yes. राइट. सो उल्का, आई रिमेम्बर कि जापानीज में ना एक चीज टर्म बोली जाती है कि मिस्टेक्स आर द ट्रेजर हंट. कि अगर Yes. हम लोग वो रिपीटेडली करें देन इट्स अ बुलशिट, बट Yes. अदरवाइज इट्स अ गुड टू डू मिस्टेक्स बिकॉज आपकी लर्निंग उतनी ग्रो होती है. सो Yes. दैट जब मैंने ये चीज सुनी थी ना, सिंस दैट डे आई लाइक ओके ठीक है, मिस्टेक्स इज ओके. Yes. परफेक्शन नहीं है तो भी चलेगा, बट Yes. एटलीस्ट टेकिंग एक्शन इज इम्पोर्टेंट. सो आप लोग कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, एक्शंस लेने बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई गेस उनका Yes. लेट्स हैव फ्यू क्वेश्चंस फर्स्ट, देन हम आगे Yes. आगे एक्टिविटी वगैरह में करते हैं. सो वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम नरेंद्र शिंदे, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स. यस. सो कम्युनिकेशन स्किल्स करते समय फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर अवेयरनेस. सतर्क रहना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यू वांट टू इम्प्रूव, मीन्स व्हाट. कुछ लोगों के लिए जस्ट इंग्लिश आना लैंग्वेज इट्स मीन्स गुड कम्युनिकेशन. फॉर सम पीपल, अगर आपने मेरा, अगर मैं अगर अच्छी तरह से सुन पाता हूँ, दैट इज गुड कम्युनिकेशन. अरे आपने सुना तो है, लेकिन यू नीड टू कम्युनिकेट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, अदरवाइज आप में और आपके, जो किसी ने आपसे बात की है और आपके समझने में there might be a gap. So there might be a communication gap. For example, if I tell you, please raise your hands, both the hands. Okay. So everyone, please raise your hands. Can you do it? I can't see you, but can you do it? Raise your hands when I tell my people in the online training. You will not believe, they will just raise it this much. And then when I say, please raise it still, then they will put please or energy ke saath, then they are like this. But योर why didn't वॉइस you do this? But why didn't you do this when I told you for the first time, is my question. मतलब आपने रेस क्लियर तो किया. अंडरस्टैंडिंग नहीं है. Yes. So क्लियर why अंडरस्टैंडिंग. didn't you do it fully? Goals अपने को हासिल करना है तो you are just coming out of, you are so scared to come out of your comfort zone. सो कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन के लिए अपने को पहला एक रोल मॉडल रखना जरूरी है कि इसके जैसा मेरे को कम्युनिकेशन करना है. सो कीप सी दैट, विजुअलाइज दैट, सी इट. तो इनके जैसा, तो इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं. दिस इज द इजिएस्ट वे, इंस्टेड ऑफ रीडिंग लॉट ऑफ वीडियोज एंड ये वो तो बहुत फलाना फलाना बहुत करते ही रहते हैं लोग.
But the easiest way I can tell you simple thing is find a role model. उसमें क्या क्या चीजें हैं, write it down. उसका टोन अच्छा है, is he listening, is he not interrupting when someone is talking, is he completely understanding कैसे कर रहा है, so is he asking questions to understand, is he summarizing what he has understood, is he nodding, is he responding. तो आपका कम्युनिकेशन, so what I have done is I have put these frames in my mind. So what is happening is, it is not that someone is good or bad in while communicating. You might find it is not that someone, it is a kind of quality of frames you are putting in your mind while talking to that person. Right. So basically you are using this quality frames to deal with yourself or that person or any situation or any environment that you are in, or sometimes to empower yourself, or also to be more creative in communication. So how creative you are doesn't mean that you are a good in artist, you are a good artist. Creativeness also requires lot of practice, habits. Some Right. people are very good in humor, तो they suddenly don't become humorous. So एक दिन पूरा दिन भर में पूरा, you say whoever I'm communicating, I'm going to use humor पूरे दिन में. You practice it for 7 days. After seventh day, you see how humorous you will become because you are aware. So that's why I said in communication, the first thing is you need to be aware of all the five senses what we are using. Your ears, nose, smell, everything, the senses, your gestures, your facial expressions, how much eyebrow you're raising. That is the first thing you express through your eyebrows. That also speaks how much tone you're using, how much softness is, how much gentleness is there in your talk is very important. And what you're talking, is it too fast, is too slow? So you're putting those frames, you are aware that I'm talking slow, talking fast. Now my frame is saying that Jasmine wants to ask me a question, so I'm stopping here. Yes. Over to you. That's nice. That's right. Yeah. मेरे को नहीं पूछना. I'm just putting up new question. That's from Yeah. Alka. Yeah. What specific NLP techniques do you use in your coaching session? I guess Alka ji, we have answered this thing already, but Yeah, still you have frames, this question. anchoring, there are so many things you need to learn those techniques. So wherever require for a particular question that a participant asks me, then I use those techniques. So I find sometimes there are, first when I start my session, I start assessing my this one, the participant. So I try to put some energizers, or I put some icebreakers, so that they will talk to each other or answer my questions, or I keep some competitive things. Hmm. See, if I ask a question, no one is going to answer immediately. They take Hmm. time to get connected, but there are some who wants to answer. So you will find in during those whole session, what they do is, you will find only those people answering, and the people who are introvert are the ones who want to answer but they are scared to answer. There is one group who doesn't want to, they are been sent by the HR for the training, that's why they are sitting and passing their time. But when I keep some techniques and I use these techniques, for example, it is it it is like a strategy that I use. Okay, so basically I might say, chalo, let me have a rapid fire round, so whoever answers will get a point. So I make some teams, and then when I ask this question, they are like, every person wants to answer, and you will see there is so much of brainstorming that happens. I just said rapid fire and I started giving the points. When I said rapid fire also, they don't respond, huh? When I go and give 1 mark to the first person who answers, immediately the brain starts, and that is so much of churning. So my way of teaching also, I have, there is a shift from training to facilitation, more of, because in facilitation you believe that there is so much of knowledge in the participants, let me harness it, and I am the most quietest person in my sessions. Only I just start गाड़ी चालू करके देती हूँ, that I throw those questions to them, and there is so much of churning that comes, because आजकल किसी को लेक्चर सुनने की आदत नहीं रह गई है. It is so boring.
So this is what happens in my session. So I use some techniques, techniques to show where you started, how if you want a change in your life, there's so many things you changed. You when you started, your hairstyle was in your childhood, you had a hairstyle, then in your adulthood you had an hairstyle. So basically how did it change? So timeline ka use karti hu. So they come up with so many beautiful things. And now in future, what kind of a personality you want to see, what kind of changes you want to see, which will lead you, what are the beliefs. You can have a thing on beliefs also. So which are the beliefs are coming as a barrier you want to remove from your life. ये सारे चीजें बहुत बहुत मायने लगते हैं. एंड यू नीड टू ऑल्सो एनालाइज दिस फ्रेम्स विद क्वेश्चंस. बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हाउ यू एनालाइज, बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट. इंटरनल फैक्टर एक होता है, एक्सटर्नल फैक्टर, किसी का इन्फ्लुएंस भी रहता है. So that is it. That is how. For example, you want to become more creative. Now, creative, my question to all of you is, what comes to your mind when you say chair? I say chair. What comes to your mind? Guys, please type Yes, in chat box. please type. Yeah, please type in the chat box. What comes to your mind when I say chair? CHAIR, chair, kursi. मैं अगर कुर्सी बोलूं तो आपके माइंड में क्या क्या आता है? I want to see who is the most creative here. Jasmine, let us see who is the most creative. आप कमेंट्स ऑन कर सकते हो एंड मीनवाइल जब तक सबके कमेंट्स आते हैं देन वी विल हैव अनदर Yeah, I क्वेश्चन have the अर्पित comment इज is सेइंग on. I can see. Yeah, पेनल्टी. but no one is answering here, so I'm waiting for them to answer. I Might be just some glitch, so that's why I'm not able to see how many people are live in this one. okay. So, what is that when what comes to your mind when I say to be visible in the picture? Can you tell me the details, dear? Okay, so basically, we just want to know what comes to your mind. आपके दिमाग में क्या आता है when I say chair? CHAIR, chair. Yes, guys. Come on. Unless the more you're going to be active, the more activities I can have. I can have activities throughout the day because I'm a experiential trainer also. In my sessions, there are more of activities. Yes. जितना इसीलिए आप मैं बस देख communicate रही हूँ करेंगे. कि Yeah. कैसे आप अभी चुप कैसे बैठे हो बिना एक्टिविटीज करवाए. Yes. सो आई वाज Yes. रियली Yes. वंडरिंग इनटू दिस पार्ट. Yeah. गाइस So, प्लीज डू yes. रिप्लाई. Yes. Yes. अगर मैं Come चेक on. की बात Right. करती हूँ तो मेरे Let's have माइंड में more तो fun. डेफिनेटली वो सेक्युलर Yes. आ जाएगा. जो भी आपके मन में आता है, चेयर देखते ही आपको क्या आता है? Chair is useful for what? I'm just modifying the questions. Chair to sit. Very good. Superb. Thank you, थैंक यू Gurpreet. गुरु जी. यस. Yes, yes. Chair. सिर्फ बैठने के लिए. चेयर की यूजेस कितने यूज करते हैं? Yes, come on. What comes to your mind when you say a place to sit? Only sit. सिर्फ बैठने के लिए चेयर यूज करते हो? Yes. आई गेस इंडियन Come फैमिलीज on. में तो क्या कहते हैं चेयर के ऊपर चढ़ के जाले उतारने का काम भी होता है. Yes, of course. कपड़े सुखाने के लिए भी हो कपड़े सकता सुखाने है. के लिए. Yes. और क्या हो सकता है? Come on, everyone. I want so many answers. I was looking forward to. जितना आप वही आंसर्स ये तो हम भी करोगे. लोग बोल ही सकते हैं. यस. सो चलो, कोई बात नहीं. चेयर बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, जाले निकालने के लिए, जैसे जैस्मिन ने कहा. जैसे कि हम लोग चेयर से म्यूजिकल चेयर खेल सकते हैं, है कि नहीं? या राइट. चेयर से हम लोग बहुत चेयर के लिए तो आजकल की सबकी लड़ाई है फॉर द पोजीशन. यस. वाह. या ट्रू. शादी में भी अगर हो तो शादी में चेयर के बिना आप तो खड़े ही रहोगे क्या? कितने लोगों को मिलना रहता है एंड सो मच टायर्ड यू विल बी, सो यू नीड दैट काइंड ऑफ अ चेयर टू ब्यूटीफुल चेयर टू सिट. यस और नो? ऐसे ही जैस्मिन, मैंने मेरे एक सेशन में ये क्वेश्चन पूछा था. और इतने पहले तो सब लोग चुप थे, बट एक को कनेक्टेड दूसरे दूसरे. सो वट एवर पीपल आर सेइंग फ्रॉम दैट कनेक्टिंग आंसर्स, कनेक्ट करके 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 इतने आंसर्स आ गए. वी हैड सच अ लॉट ऑफ फन. सम पीपल ऑल्सो सेड वाइफ से हाइड करने के लिए भी चेयर यूज कर सकते हैं. कुछ लोगों ने, दैट्स सेल्स के अमेजिंग. जो लोग थे, उन्होंने तो बोला मैडम हम तो ये चेयर को बेच के हम लोग पैसा कमा सकते हैं. सो इट स्टार्टेड विथ एग्जैक्टली व्हाट गुरप्रीत कौर जी ने बोला है यहाँ पर, टू सिट. सबका वही स्टार्ट होता है.
कहीं पर कितने बार भी मैंने ये एक्टिविटी लिया है, इट स्टार्ट्स विथ टू सिट, बट देन इट कम्स टू सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स एंड सो मच ऑफ लॉट ऑफ फन वी हैव इन द सेशन दैट यू कांट बिलीव व्हाट आंसर्स विल कम आउट. यू नो, प्रॉप्स के लिए यूज कर सकते हैं, डांस के लिए यूज कर सकते हैं, किसी को मारने के लिए, अगर फायर लगी तो कांच फोड़ के बाहर जाने, सो सो मेनी थिंग्स कम आउट. सो this is how you need to push yourself to be more creative. Creative thinking ऐसे ही नहीं आएगा. So you will have to work for it, you will have to push. तो auto mode में your mind will start working, so you will become a problem solver also, because you will not be satisfied. आप एक आंसर से satisfied नहीं रहोगे, you will start pushing yourself, pushing yourself, pushing yourself. क्योंकि देर आर टू टाइप ऑफ पीपल, प्रॉब्लम आते ही क्या करते हैं, दे आर फोकस इज क्यों आया पनवती, मेरे को कैसे आता है, बाहर लोगों को क्यों नहीं आता है, मैं ही क्यों अटक जाती हूँ, मेरे पे पहाड़ टूट पड़ा है. बट देर आर अनदर सेट ऑफ पीपल whose focus is more on the solution, because उनके दिमाग में फ्रेम्स बैठने चालू हो जाते हैं, और क्या किया सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है. So these are beautiful things. Thank you. Okay. Thank you for the lovely ability reasons. Yes, Yes, Prithvi ji, great. thank you so much. So what you can see is how many beautiful frames you have added is more and more creative you will become. तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगेगा. You will just wait for problems. Instead of problems, you will start calling it as challenges. And then you see how beautiful your life is, because जो किसको प्रॉब्लम नहीं रहता है, only a person who is dead doesn't have problem. हर एक को प्रॉब्लम है, इसलिए we are alive. So we take those problems as challenges and we start working, because we are using beautiful frames in our mind to solve it, and we are interested in solving it. Our mind is, sometimes we alone can't solve it. So what we do, we have the frames, we use दूसरों के फ्रेंड्स जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, या वो प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व किया है, ऐसे लोगों को हम एक्सपर्ट, जैसे आपने बोला है, कीपिंग मेंटर इज समथिंग इम्पोर्टेंट. यू विल नॉट गो आउट ऑफ द ट्रैक. कुछ लोगों को लगता है गुरु नहीं होगा तो चलेगा, हम ही हमारे गुरु है. ऐसा नहीं होता है. सो गुरु यानी नॉट ओनली स्पिरिचुअल गुरुज, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड इन विच यू वांट टू एक्सेल. सो उनकी राय Definitely. लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके फीडबैक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज फीडबैक आप नहीं लोगे तो यू दैट टू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, नॉट अ पर्सन हु इज ऑलवेज पुलिंग यू डाउन और हमेशा आपका क्रिटिसिज्म करता है. नहीं, किससे फीडबैक लेना है, किस टाइम पे, तो उसका भी एक अच्छा सा फ्रेम रहता है. सो यू नीड टू वर्क ऑन दोज फ्रेम्स विच विल हेल्प यू टू सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स. Also, I will tell you, उल्का जी, Jasmine. जस्ट वन See, थिंग, yeah, फ्रेंड्स, अगर आपको उल्का का सेशन अच्छा लग रहा है, जस्ट से चीयर्स टू हर, आइदर टाइप ऑसम, आइदर समथिंग. आई जस्ट वांट दैट चैट बॉक्स को आप फिल कर दो विद मैसेजेस. प्लस डू लाइक दिस वीडियो सो दैट ये और भी लोगों के पास जा सके. एंड इफ यू रियली वांट टू हैव one Zoom session with Ulka, please type yes in a chat box so that we can ask Ulka to give us some time in coming days to yes, have more conversation and to have a more activities to understand ourselves, to understand our mindset, how we can change our frames. Right, Ulka? I yes. hope आप हमें Frames time to become दोगे. an influencer, frames to become more efficient. See, basically, मुझे लगता है there are some strategies we need to use. इसके ऊपर भी पूरा सेशन हो सकता है on strategies, how to build strategies. क्योंकि when you have strategies, the chances of failure is less. Strategy यानी एक रणनीति जो बनाते हैं हम, उसका Right. यूज करना, बिकॉज दैट इज स्मार्ट वर्क. उसमें आप हार्ड वर्क करते नहीं बैठोगे. यू विल सेव योर टाइम, यू विल हैव सम प्लान्स, यू विल हैव प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. उसमें भी सिर्फ प्लानिंग करके फायदा नहीं, यू नीड टू हैव गुड नेटवर्क. लोगों के साथ कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, जो अपनी बात है, अरे मेरी बात नहीं, सेम थिंग आई हैड टोल्ड दिस पर्सन, ही डिडंट लिसन टू मी, लेकिन उसकी बात उसने सुनी, एंड ही डिड इट एंड ही इज गिविंग क्रेडिट टू अदर पर्सन. सो ये जो अपने लाइफ में सबको जाना पड़ता है, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, वो कम होते जाएगा, बिकॉज यू हैव डेवलप्ड दो स्किल्स, आपने वो स्किल्स को अडॉप्ट कर लिया. जेलेसी आज कल, जैस्मिन, टुडेज मोस्ट important and the most people are going through is two things.
एक तो मीन्स डिस्ट्रैक्टिंग माइंड, एक काम करने जाओ तो डिस्ट्रैक्ट होता है, यहाँ वहां वहां। मोबाइल पे भी एक चीज देखो तो 10 चीजें आ जाती है, देन यू गो इनटू दैट फ्लो एंड कहाँ का कहाँ आपका टाइम जाता है, सो मच ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। Yes. So true. So basically, these are the two challenges according to the research. They have found distraction that people are going is the biggest challenge. So how Hmm. we are putting frames, how we are aware, अरे my मेरा mind distract हो गया, no उसको खींच के लाओ. So that's why a lot of meditations, ये वो फलाना फलाना बहुत सारी चीजें. But if you are aware, जितना आपका awareness excellent होता है, उतने आप focus रहते हो and you start excelling in that thing. एक चीज ऐसी तो करनी चाहिए जिसके वजह से आपका नाम होता है. दैट इज ब्रिंग, ये चीज देखते ही लोगों को आपकी याद आनी चाहिए. Even if it is the housewife or a person who's working or anything, there might be so many CAs, but what is that this CA does in his unique style? If this is a housewife, what is that? To put those frames and try to be better and better and better in that, ताकि वो चीज देखते ही आपका नाम मुंह पे आना ही चाहिए. आई गेस Whether उल्का, you're, आपने yeah, मुझे ना पुराने डेज में डाल दिया है, आपकी बातें yes, सुन के आए, और आई एम स्टार्ट रिमेम्बरिंग कि मेरे को कहाँ कहाँ पे किस किस वर्ड से जाना जाता था, व्हाट आई एम yes, नोन फॉर इन माय कॉलेज ड्यूरिंग माय वर्क. सो yes. दैट्स रियली सुपर्ब. आई गेस यस, मजा आ रहा है आपके साथ समटाइम्स connect करके. आपने जो बोला, जो हॉबीज रहती है उससे भी लोग कनेक्ट हो सकते हैं, उससे भी आपको हम्म. याद करके आपका प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे मेरे इसमें माय वर्क, आई वाज डूइंग हार्ड वर्क, बट जब भी मैंने मेरी जो हॉबी थी डांसिंग, क्लासिकल डांसिंग की, मैंने छोड़ दी थी कि मेरी अभी शादी होगी, आई वोंट बी डांसिंग एनी मोर, मुझे अभी बच्चे हो गए, व्हाट दे विल से, व्हाट माय इन लॉज विल से करके मैंने छोड़ दी थी. बट somehow I got into it again because of one of my friends, Savita Savanal. And then what happens is basically I got one partner to dance, ये वो, तो I started, but वो hobby के वजह से people started knowing me a lot, and then they started even giving me a lot of business. So where, how your hobby can connect you, because I framed it, I reconstructed my frames of my image. तो ऐसे नहीं कि अपने बारे में सिर्फ वीडियोस डालते जाओ और अपना प्रमोशन करते जाओ. कोई भी चीज हो सकती है आपकी बातों से. या देर इज वन फ्रेंड आई नो, दैट पर्सन वो कुछ नहीं करती है लेकिन लोगों को सिर्फ अप्रिशिएट करती है. उसने वो अप्रिसिएशन का लेवल इतना हाई है कि नो वन, आई हैव नॉट सीन एनीवन हु कैन मैच हर लेवल. इतना अप्रिसिएशन एंड जेन्युइनली, ऐसे नहीं कि किसी को बटरिंग करना है, या इट इज जेन्युइनली with some kind of logic she will tell you why I feel something great about you. So ये जो चीज है, उसको उसके मुंह में कभी दूसरों के बारे में गॉसिप ही नहीं होता है. She can never do that. If you find you are more gossiping, Hmm. try to, you want to stop being gossiper, then what you have to do, don't talk about anyone who is not present. Just do this exercise. This is the technique. You will stop becoming a gossiper. जब भी वो आदमी आपके सामने है तभी आप उनके बारे में, इफ यू वांट हिम टू improve, you talk about that, but don't talk about that person when that person is not there. You will stop gossiping. That is very very beautiful thing which I have learned from so many different people. Even jealousy, the second challenge I want to tell you, one is distraction, second is jealousy. इतनी फैलती जा रही है कि jealous कैसे अपने आप से, कभी कभी अपने स्पाउस या बच्चों से या इन लॉस के साथ jealousy इतनी हो रही है एक दूसरे के. So how to control it? So there is nothing that you can work, you have to work on yourself. तो उसके लिए, उससे क्या अच्छा हुआ, वो चीज होने के वजह से उससे क्या अच्छा हुआ, इफ यू थिंक ऑफ दैट, इफ यू गिव आंसर, प्रोवाइड आंसर टू योर ब्रेन, दैट विल काम यू. या जो आपके साथ जेलसी करता है, उसको क्या है, वाई, व्हाट इज द फ्रेम, आई पुट द फ्रेम. मैं ऐसे फ्रेम्स डालती हूँ कि उसको ना मेरा प्यार कम पड़ रहा है, तो आई नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद दैट पर्सन और हेल्प दैट Hmm. पर्सन समवेयर, तो वो जेलसी निकल जाए. ऐसा हेल्प करो कि उसने सोचा भी नहीं था कि ये मेरे को इतना मदद कर सकती है, मेरे बारे में अच्छा ही बोलते जा रही हूँ, मैं कितना इसकी बुराई कर रही हूँ, या मैं कितना इसका बुराई कर रही कराओ, बट दिस पर्सन इज गोइंग ऑन टॉकिंग गुड ओनली अबाउट मी. सो यू नीड नॉट वरी कि इसने मेरे बारे में दूसरे को क्या बोला और वो दूसरा आदमी भी मेरे से बात करना बंद कर दिया. इट्स ओके.
No problem. Let it एक्चुअली आई go. गेस ये आज के टाइम पे जो क्वेश्चन आता है कि इट्स नॉट अ Yes. प्रैक्टिकल थिंग टू फॉलो, बट Yes. व्हाट Yes. आई फील इज कि यस, समटाइम्स ऐसे लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, बट करना शुरू करो, यू स्टार्ट फीलिंग चेंज इन योरसेल्फ। अब Yes. परवाह नहीं होती कि लाइक व्हाट अदर पीपल विल थिंक अबाउट अस। हमारा Yes. काम है कि इन सब चीजों से दूर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का। डे बाय डे वी Very हैव well. टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। तो ये जो चैनल है, ये Perfectly said. रेगुलर ऐसे एग्जांपल्स देके जाएगा कि आप रेगुलर अपने ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। आई चैलेंज यू, आई बेट यू, अगर आप इन एक्सरसाइज को फॉर 3 मंथ्स फॉलो करते हो, या आपका फोकस आपकी हेल्थ हो जाएगी, आपका करियर हो जाएगा, आप सबको ब्लेस करोगे। बट प्रॉमिस आपको ये करना होगा कि आप इस चैनल पे कंसिस्टेंटली आओगे, रेगुलर एक्टिविटीज करोगे एंड डू पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द लाइव सेशन। ये नहीं है कि एक पर्सन ने मेरा आंसर नहीं किया, बातें चल रही है तो आई एम लीविंग दैट सेशन। नो, नथिंग लाइक दैट। यू हैव टू स्टिक विद द सेशन, क्योंकि समटाइम्स फ्लो चल रहा होता है, तो ब्रेकिंग दैट फ्लो इज ऑल्सो नॉट गुड वे, राइट? आई Right. होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड इट्स अ फ्रेंडली रिक्वेस्ट। आप ही लोगों के लिए है। अभी हम बहुत ज्यादा लोग नहीं आ रहे कि आपके क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे। अगर मिस हो भी रहा है दैट्स ओके, आप दोबारा से अपना मैसेज सेंड करिए। आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो रही, आप दोबारा से क्वेश्चन करिए। वी आर हियर फॉर यू, राइट उल्का? Yes. तो And आप थोड़ा Jasmine, सा just प्लीज remember, के it is बारे में not the बोलिए। number of, yeah, it is not the number of people. Even if two or three people can get the best out of your session, you are rocked. You have rocked. You have done a great work, राइट, because that one person is connected with so many family members, is connected to so many people in the society, is connected to so many people in India. So basically, that will surely make lot of difference. और हम इतने अच्छे सोच विचार के लोग बनते जाएंगे, तो there is so much power in it that one day our country will, that is how a culture starts, you know. जितने आप अच्छा कल्चर अपने घर में लाते जाओगे, अंडरस्टैंडिंग पावर जितनी हाई रहेगी, इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ योर सेल्फ अवेयरनेस। एक अपनी फैमिली अच्छी हो गई, फैमिली में 4 लोग तो रहते, 3 लोग तो रहते, कम से कम 2 तो लोग रहते हैं। सो बेसिकली दिस 2 पीपल कैन स्प्रेड लाइट, इट कैन स्प्रेड लॉट ऑफ गुड थिंग्स। एंड स्लोली, इसको टाइम लगेगा थोड़ा, बिकॉज इन ऑटो मोड में सबकॉन्शियस माइंड को वो उसकी हैबिट बनाने के लिए टाइम लगेगा। बट ये सुनते जाओगे, करते जाओगे, it is going to help. And Jasmine, you are doing a wonderful work by connecting and giving these free sessions back to the society, will give you a lot of blessings. वो blessings account ही अपने को जो miracles आते हैं ना अपने life में, it is because of the blessings that you get from something which you want to give to others. So be a giver and get the blessings, क्योंकि पैसा, फाइनेंस, अपना बैंक में अकाउंट जो रहता है, उसमें जो पैसा था वो आएगा और निकल भी जाएगा, लेकिन ये ब्लेसिंग्स विल रिमेन फॉर एवर, विच विल हेल्प यू टू गिव ब्रिंग राइट पीपल एट द राइट टाइम। या कुछ किस चीज से आप बच सकते हो, या एक्सीडेंट से बच सकते हो, या एनीथिंग व्हेन यू आर इन द क्रिटिकल स्टेज, यू डोंट नो व्हाट टू डू, that time these people come in front of you and help you like god, and that is because of your blessing accounts which you are giving free to others. Yes. थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। सेशन के टाइम पे अगर ऐसी चीजें मिल रही हैं, सीरियसली समटाइम्स व्हेन पीपल से ना यस यू आर डूइंग गुड जॉब एंड ऑल, फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे लगता है कि ये मेरी रियल कमाई है। क्योंकि आई रिमेम्बर कि रॉबिन शर्मा ना एक चीज बोलते हैं, और मुझे बहुत टाइम से कनेक्टेड है, कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हो, जब यू आर टेकिंग योर लास्ट ब्रेथ ऑन योर डेथ बेड, तो आप कैसे अपने आप को देखना चाहते हो? तो सिंस डेट डे मेरी हर एक डायरी में ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन पड़ा हुआ है। तो मेरे को आदत है कि मैं जो अपने डायरीज कलेक्ट करती हूँ, जो लिखती हूँ, आई ऑलवेज कीप इट सेफ, कि रिमेम्बर कि मैंने पहले क्या सोचा था और मैं आज कहाँ पे हूँ। दैट रियली हेल्प मी टू कनेक्ट एज वेल। तो Yes. guys, it's like a giver's game, and Yes. really I wanted so much of blessings। और अगर मेरे को ये फर्क पड़ता है कि आप लोगों की लाइफ किस वे से चेंज हो रही है, थोड़ी सी भी चेंज हो रही है, ये मेरा मिशन है। क्योंकि उल्का, आई नेवर टेल दिस थिंग, व्हेन आई वाज, मुझे अपनी हायर स्टडीज करनी थी। माय मॉम वाज अ सिंगल पेरेंट, शी कुड नॉट अफोर्ड इंजीनियरिंग दैट मोमेंट। तो आई रिमेम्बर जिन्होंने मेरी जहाँ से स्कॉलरशिप लगी थी, यूएस फाउंडेशन से ही लगी थी।
तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी, बेटा आज मैं कर रहा हूँ, इन फ्यूचर तुझे ये चीज़ करनी है। तो आई गेस ज्ञान से ज़्यादा इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है अगर हम किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि दैट विल रियली गोना चेंज अदर पर्सन लाइफ। Yes, very, very well said, Jasmine. Fantastic what you said is makes lot of it is so insightful what you said just now. And people are the best asset. That is the best property, that is the best wealth that you can have. कोई भी एक जा हम जब भी इस दुनिया से निकल के जाने वाले रहते हैं, सो जस्ट आस्क योरसेल्फ, हैव यू हैड फैंटास्टिक रिलेशन विद एवरीवन? यू शुड गेट अ थम्स अप. हैव यू यूज्ड द बेस्ट पोटेंशियल विद इन योरसेल्फ? You should get a thumbs up, otherwise it will go in the grave. All the richness that we have is going to go. So people is very important, that is the best wealth. पैसे से ज्यादा जब आप people की वैल्यू करोगे, each and every person, because we are the bits and pieces of all the souls in this world. So that is very important. People के साथ trust, jealousy, see, थोड़ी बहुत jealousy होना, it's a natural for everyone, so don't get scared about it. But कितने हद तक, if it crosses a particular extreme, then it will create lot of lack of trust. Relationships are most precious. A family is the most precious. भले वो राइट, फैमिली में एक आदमी भी रॉन्ग होगा या नहीं अच्छा होगा, उसको हम कैसे एम्पावर करेंगे, दैट इज अ चैलेंज. You take the responsibility and see what will come out of it राइट। beautifully. That is all I would like to say in this session. Yes. आई गेस इवन आई एग्री टू द सेम कि हम लोगों की लाइफ ऐसी है कि जहाँ पे हमें हर दिन चैलेंजेस मिलते हैं गाइस। सो इस चैनल का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आपको एक्टिविटीज़ दें। आप ये बातें सुन के भी अगर एक पर्सन भी चेंज होते हो, सो दैट्स आर विन फॉर टुडे। एंड आई होप आप सब लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ जाके लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज अदरवाइज हम लोगों का ये जो मोटिव है टू रीच टू एन नंबर ऑफ पीपल, तो वो कंप्लीट नहीं होगा। सो वी रियली नीड योर सपोर्ट्स एंड ब्लेसिंग टू ग्रो दिस चैनल। एंड सब तक ये फ्री एजुकेशन जो है, फ्री नॉलेज जो है, ये सब तक पहुंच सके, सो दैट पीपल विल स्टार्ट चेंजिंग, आज सोसाइटी विल स्टार्ट चेंजिंग, जहाँ पे Yes. अभी हमारे पास गिवर्स आएंगे ना कि टेकर्स आएंगे। एंड देयर वाज अन ब्यूटीफुल थिंग, किसी ने मुझे बोला था कि हमेशा याद रखना जब हम बात करते हैं गिव एंड टेक, इट्स नेवर लाइक टेक एंड गिव, पहले दो फिर लो। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर हमें छोटी छोटी चीजें याद रखें, गिवर्स गेन, गिव एंड टेक, तो हमें अब हमारी लाइफ का एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि देना सीखो, आना किस वे से आएगा, लेट इट टू बी द गॉड वर्क, राइट। Yes, very nicely said, Jasmine. And I wish your this channel gets lot of good promotions, and basically you will rock because you are doing a fantastic job by being connected to a lot of good people. And see, अपने को good होना या bad होना है, that is a secondary thing. First is for your mental well-being and happiness. You need to always give all the योर फील्ड, योर जोन हैज टू बी पॉजिटिव. आपके आजू बाजू में जो ऑरा एक आप क्रिएट करने वाले हो, वो हमेशा पॉजिटिव होनी जरूरी है. द मोमेंट यू रिमूव सम बैड थिंग अबाउट सम पर्सन और this one, it is natural, sometimes it comes out, but then how you repair it is very important. Gussa aana राइट, not wrong, it is your emotion, but how fast you can. I have given only 16 minutes, 16 minutes for myself to come over my anger. So in 16 minutes, people, I forget what had happened, I just delete it and trash it. So this habit has helped in my family also to remove all these emotions, negative emotions, and immediately we talk to each other. Otherwise, initially it would happen, we were not talking for 2 to 3 days, or we are not eating food, this that, ये बहुत लोगों के घर में होते रहता है. आई और anger रिमेम्बर is the सेम। worst virus. It goes on. If you get angry on your child, then the child will get angry on the friend, then friend will get go home and get angry on his mother, mother will get angry on father, father will go to the workplace.
he will Endless get chain. angry on his colleague, and it is a spreading like fire. The virus is non-stoppable. So where to stop and cut it? So 15 to 16 minutes is the time you give to yourself and work on it. That is all I would say. And save your energy. That is very important. So while you're using your frames, yes, yes, it is a poison, very worst poison. Anything you do in extremes is poison, I would say. Anything love, if you love someone, don't love too much that it becomes a poison. Or Because if that you're become a hitting someone, yes, possessiveness. It's not a love extreme, then. anything in extreme is poison only. If we are also hating someone, don't hate so much that it becomes a poison to yourself only. Okay, because when you curse someone, that poison is creating, all the hormones have been created, poisonous hormones are already secreting in yourself. So when you curse someone or get angry, immediately control, so that you can, because cortisol's hormones are secreted which stay in your body for 3 days, and you will only suffer. You might get some things, you might create some blood pressure, your blood pressure will go up, other person's blood pressure might come down. So you have to take care of all these things. So with that note, I Okay. think so we come to the end of how beautifully and quality frames you are going to use and deal with others, and win. To have a win-win attitude is what we are looking forward to. Yes. So thank you everyone for joining us, and thank you Ulka for giving us such a valuable time of yours. So Thank really you. thank you and appreciate from my heart, and My everybody in pleasure. our audience जिन्होंने आके सुना, Yes. जैसे सुना, जितना टाइम हमें दिया, जितना पार्टिसिपेट किया, थैंक यू एवरीबडी, बिकॉज हर एक छोटा सा एफर्ट रियली मेक सेंस. एंड अगर आप रियली चाहते हो, आपको लगता है कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन रियल सेंस, प्लीज डू शेयर दिस चैनल विद एन नंबर ऑफ पीपल जहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, सो दैट मोर एंड मोर पर्सन विल लर्न, एंड हम लोग एक अच्छी सोसाइटी बना सके जहाँ पे गिवर्स की सोसाइटी हो, ना कि टेकर्स की. So with this note, thank you once again and love you all. We'll see you tomorrow at the same time, 1 p.m., with another amazing speaker. Take care till that time. Bye bye. See you. Thank you, Gurpreet, also for responding so well, and everyone, those who have asked questions and responded. And Thanks Arpit, from I the guess bottom of आपका my heart. question pending है, that we will like connect you with Ulka on Facebook or somewhere. You can ask her detailed thing about NLP. Yes. Thank you. See you. Bye bye. Yes. See